Hello my dear student, गोटे नुआ वीडियो लेक्चर फ्रेंड आप समस्त वेलकम करुच्ची। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टैटिक्स फ्रेंड एबे आमे जीवा डायनामिक्स को ऑलरेडी फ्रेंड में डिस्कस करते जे डायनामिक्स मीन्स वी आर गोइंग टू डील विथ द बॉडीज इन मोशन। तो फ्रेंड एबे वस्तुर आमे गति जेतेबेले करथबो तार फोर्स एनालिसिस करबा, तार वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस करबा, दैट इज नोन एज डायनामिक्स। तो डायनामिक्स रा फर्स्ट कांसेप्ट फ्रेंड आपनकर अछि रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, वीडियो लेक्चर नंबर 11 सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो चलो हम डिस्कस करबा व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन और यार विभिन्न प्रकार न्यू कांसेप्ट। सो फर्स्ट डेफिनेशन है रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। धरन फ्रेंड जे कोनसी गोटे बॉडी अछि, इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द ए टू द पॉइंट बी, दिस मोशन इज नोन एज योर रेक्टिलिनियर मोशन। तो सिंपल फ्रेंड यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन रे मोशन करूची ताको हमें कहबा रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट कर्विलिनियर मोशन। ना रो फ्रेंड आप जानि पारुतबे व्हाट इज कर्विलिनियर। बॉडी मूव्स इन ए कर्व पाथ। जदि फ्रेंड गोटे बॉडी कौन से प्रकार कर्व पाथ रे मूव करूची फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस मोशन इज कॉल्ड एज कर्विलिनियर मोशन। वेरी सिंपल। ओके, देन फ्रेंड आसन देखिबा कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो फ्रेंड बेसिकली आम सिलेबस में रेक्टिलिनियर मोशन अच्छी, तो आम रेक्टिलिनियर मोशन जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छे सबको आम वन बाय वन डिस्कस करवा। फर्स्ट फ्रेंड आसला तार कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट। निहाती फ्रेंड आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड शुणिथिबे। व्हाट इज डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो फ्रेंड दुईटा पॉइंट मध्य सबुठ कम डिस्टेंस जो पाथ अच्छी दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट को एक्स अक्षर रे भी लिखा जाए, कितना जगह फ्रेंड एस अक्षर भी लिखा जाए। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस, द टोटल रूट और द लॉन्गेस्ट पाथ। तो फ्रेंड दुईटा पॉइंट को जावाई जो सबुठ लंबा रास्ता रही डिस्टेंस बोलिकी कह जाए, या बेसिकली फ्रेंड डी अक्षर रे सोचा जाए। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन। आपण फ्रेंड गति करुवा समय रे जो डिस्टेंस रे चेंजेस आसुची से कॉन्सेप्ट को फ्रेंड स्पीड बोलिकी कह जाए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड आपण समस्ते बाइक चलाउथबे, आम गोटे बाइक रे जाउछे, हमको पचरा जाउछे गोटे बाइक रो स्पीड केते अछि, आपण कहउछन्ती 50 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड 50 किलोमीटर जो कोन, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आवर टा फ्रेंड जो समय डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नो फ्रेंड, दिस इज अबाउट द डिस्टेंस। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज योर स्पीड। ओके, तो फ्रेंड जदि आम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आउ थे बुझा चाहिए, आसतु आ गोटे एग्जांपल हिसाब से बुझा। लेट अस हियर ए एंड बी फ्रेंड दुईटा जगह अच्छी। तो ए रु बी को जुआ पर्यंत फ्रेंड एठू गोटे पाथ अच्छी, दिस वैल्यू इज 8 किलोमीटर। लेट अस से ए रु बी पर्यंत स्ट्रेट लाइन पाथ अच्छी फ्रेंड, दैट इज फ्रॉम 10 किलोमीटर्स। अनदर पाथ फ्रेंड ए टू बी पर्यंत जावाई अच्छी, दिस इज फ्रॉम 6 किलोमीटर्स। राइट, तो फ्रेंड इठी दिस मोशन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो आई कैन से ए टू बी रो जो मोशन अच्छी फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। किंतु फ्रेंड ए टू बी पर्यंत ए पाथ दिस इज द कर्विलिनियर मोशन फ्रेंड, शॉर्ट रे फ्रेंड सीएम बोली लिखि दउची। दिस इज फ्रॉम ए टू बी, दिस इज आल्सो कर्विलिनियर मोशन बिकॉज द मोशन ऑफ द बॉडी इज इन ए कर्व्ड पाथ। एति फ्रेंड क्लियर। तापर फ्रेंड हम देखा डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड आप निजे कहतु डिस्प्लेसमेंट को जदि मु एक्स लिखिबी केते हेबो, ए रु बी दिस इज 8 किलोमीटर्स, ए टू बी दिस इज 10 किलोमीटर्स, ए टू बी दिस इज 6 किलोमीटर। तो आम डेफिनेशन फ्रेंड लिखिले डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट फ्रेंड 6 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जगह 6 किलोमीटर्स। फ्रेंड डिस्टेंस केते हेबो, द लॉन्गेस्ट पाथ कोटा फ्रेंड 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 ऑब्वियसली। तो 10 किलोमीटर लॉन्गेस्ट पाथ, सो डी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। एबे आसन फ्रेंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विषय टिके डिस्कस करबा। तो फ्रेंड नेक्स्ट आम डिस्कस करबा वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रेंड वेलोसिटी बोली भी कहा जाए, नॉर्मली आम समस्त फ्रेंड वेलोसिटी वर्ड ही यूज करूँ, बट दिस इज आल्सो नोन एज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी फ्रेंड आम बी अक्षर लिखू। तो वेलोसिटी कॉन्सेप्ट कहला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड फ्रेंड मन पकात से डिस्टेंस थिला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।
इज नोन एज योर वेलोसिटी ओके तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट को तो आम मीटर रे मापू टाइम को सेकेंड रे तो यार यूनिट हो गला फ्रेंड मीटर पर सेकेंड तो मन रखिए फ्रेंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम अच्छा इंस्टांटेनियस वेलोसिटी फ्रेंड ताहले पुणी कौन वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टांट ऑफ टाइम धरन तो अपने आपन गोटे फिक्स टाइमिंग रे पर्टिकुलर टाइमिंग रे आपन वेलोसिटी को मेजर करबा को चाहछंती ताहले से वेलोसिटी फ्रेंड मु कहबी इंस्टांटेनियस वेलोसिटी तो केमिति फ्रेंड या को लिखिबा v इंस्टांटेनियस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट को आमे x बोली के लिखुचे टाइम को t बोली के लिखुचे तो या को फ्रेंड मु लिखिबी dx डिवाइड बाय dt दैट मींस small change in the displacement divided by small change in time is known as your instantaneous velocity okay next one acceleration also known as average acceleration पुणी फ्रेंड सेम कथा आमे बेसिकली एक्सेलरेशन रे कहूचे किंतु रियल भाषा रे फ्रेंड यार नेम होची एवरेज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन फ्रेंड कोन ए अक्षर रे आमे लिखू तो दिस a is equal to rate of change of velocity तो वेलोसिटी फ्रेंड केते चेंज होची टाइम अनुसार दिस इज नोन एज योर एक्सेलरेशन तो फ्रेंड वेलोसिटी को आमे लिखलु v टाइम को आमे लिखु फ्रेंड t तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डिवाइड बाय t तो वेलोसिटी रो यूनिट आमे जस्ट लिखले फ्रेंड आमे मीटर पर सेकंड टाइम रो यूनिट फ्रेंड अगेन सेकंड तो एक्सेलरेशन रो यूनिट केते हेबो मीटर पर सेकंड स्क्वायर s फ्रेंड तळक आसेबो s * s स्क्वायर हेबो ओके नेक्स्ट instantaneous acceleration so acceleration of a body at a particular instant of time पुणी फ्रेंड समय से समान कथा गोटे पर्टिकुलर टाइम रे जदि आपण एक्सेलरेशन मेजर करूछंती दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन सो i इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू dv डिवाइड बाय dt केतरा जगह फ्रेंड एमती del v डिवाइड बाय del t लिखा जे से समान जिंस फ्रेंड लिखिबार प्रोसेस इज डिफरेंट सेम जिंस del v डिवाइड बाय del t तो फ्रेंड आपण वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांसेप्ट को बहुत क्लियरली एटी बुझिले तो फ्रेंड या को अन्य प्रकार यूज करिवार किछ मेथडोलॉजी जे देखंतु मु लिखली डिस्प्लेसमेंट को x वेलोसिटी को v और एक्सेलरेशन को a आमे फ्रेंड कहिले व्हाट इज x डिस्प्लेसमेंट v माने हला वेलोसिटी a माने हला एक्सेलरेशन वेलोसिटी रो हमने डेफिनेशन रखिले फ्रेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ठीक से फ्रेंड एक्सेलरेशन रो हमें लिखिले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और राइट फ्रेंड मते कहन तो फ्रेंड a इज इक्वल टू मु लिखिली dv डिवाइडेड बाय dt दिस इज इक्वल टू d डिवाइड बाय dt फ्रेंड v जगह रे मु लिखि परिबी कि dx बाय dt तो इनटू dx डिवाइड बाय dt ओके तो फ्रेंड मु ए हिसाब रे जदि लिखबी दिस इज d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर ओके तो फ्रेंड जदि आमे डिस्प्लेसमेंट को दी थरा भी चेंज करबा दैट इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी रो सिंपल कांसेप्ट हो फ्रेंड dx by dt एक्सेलरेशन हो dv by dt तो फ्रेंड ए दीटा डेरिवेटिव रो फार्मूला फ्रेंड आपन प्रॉब्लम सॉल्व करिवारे हेल्प करिवो ओके गुड एग्जांपल भी देखिबा आगो को सेते बेले एटा केमिति यूज होय फ्रेंड आपन भी जानि परिबे नाउ यू नीड टू रिमेंबर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी acceleration can also be written as double derivative of displacement with respect to time okay very clear okay next one हमें देखिबा uniform motion when the body moves with constant velocity जदि फ्रेंड गोटे बॉडी गोटे constant velocity for example friends we have a body जे कि constantly फ्रेंड 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रे मूव करूची that is known as your uniform motion हमें पढ़ी जस्ट अभी पढ़ले फ्रेंड एक्सेलरेशन फार्मूला इज dv डिवाइड बाय dt that means rate of change of velocity with respect to time this is equal to d by dt of हमें फ्रेंड कोन कहले हमर वेलोसिटी कांस्टेंट अछि when the body moves with constant velocity according to the concept of mathematics हम जानि छी फ्रेंड गोटे कांस्टेंट रो डेरिवेटिव 0 होय हॉल नहीं मते कहंतु सो फ्रॉम दिस वी हैव ऑब्जर्व दैट फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन जदि फ्रेंड गोटे वस्तु यूनिफॉर्म मोशन करूची तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0 वेरी क्लियर ओके नेक्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if the velocity changes equal in magnitude in equal interval of time
that is called uniform acceleration. That means friend, धरंतु आमे for a time interval of 1 minute, t2 is the time interval of 2 minutes. 1 मिनिट रु 2 पर्यंत फ्रेंड आम वेलोसिटी मापिले आम देखिले ये जो v1 रैल्यू फ्रेंड थिला 2 मीटर पर सेकेंड एगेन फ्रेंड t2 में मारे दुई जन मध्य 1 मीटर अच्छी ठीक सेमती फ्रेंड ये जो वेलोसिटी चेंजेस अच्छी गोटे मिनिट रे ये फ्रेंड अच्छी 4 मीटर पर सेकेंड. ओके तो देखो ये फ्रेंड वेलोसिटी 2 डिवाइड बाय 1 ये होगा फ्रेंड 4 डिवाइड बाय 2. दिस इज ऑल्सो 2. दिस इज ऑल्सो 2. The velocity change equal in magnitude in the interval of time. This case is called uniform acceleration. That means acceleration value same रहिबो. एठी भी फ्रेंड रहिला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एठी भी फ्रेंड रहिला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बुझी पाले फ्रेंड ए प्रकार मोशन को आमे कहि पारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म मोशन भी आपण जानले फ्रेंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विषय जानले. एबे फ्रेंड किछि ग्राफिकल कांसेप्ट मु आपण सिखेबी जोटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो भी आउ कांसेप्ट दृष्टि रो भी. तो फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. चलो तो फ्रेंड आगे ग्राफ को ड्रा करिबा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो फ्रेंड टले मु नै जाउ छी टाइम. This is from the x-axis, this is from the y-axis. Y-axis no different displacement. Okay, so from time go shortly we can write t and displacement can be written as x. This is the displacement time curve. So let us say friend a body moves like this. तो ये जगह रे मैं गोटे पॉइंट let us say observe कली. This is one. Let us say this is the peak point. This is the point 2 and this is the point 3. Very clear? Okay. So at this point friend, let us say this time is t1 here. Here is time t2. Here is time t3. So this friend displacement, let us say this is x1, this is x2 and this is x3. तो ग्राफ अनुसार फ्रेंड एटा गोटे पॉइंट आसला और एटा गोटे पॉइंट आसला. तो फ्रेंड ये जो जगह रे आम देखिले गोटे जिनस आम ऑब्जर्व कले जे आम ऑलरेडी फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम dx डिवाइड बाय dt. हाँ ना नहीं फ्रेंड कहतु. तो जो जगह रे ये जगह रे x3 t2 रा चेंजेस अच्छी x2 t2 सहित चेंज होची x1 t1 सहित चेंज होची. तो आम देखिले फ्रेंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शोइंग रेट ऑफ change of displacement rate of change of displacement with respect to time. That is the velocity. तो यही कर्व फ्रेंड आम गोटे जिनस डिस्कवर कले जदि आपन को पचारला फ्रेंड जे ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज आपन कौन देखो आम निजे भी देखिले फ्रेंड आम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रो कौन पाउचे वेलोसिटी of that body at any instant. तार अर्थ हो फ्रेंड जेकोसी मुहूर्त माने आम जो पढ़ी फ्रेंड इंस्टांटेनियस वेलोसिटी आम मेजर करें कौ ग्राफ रो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. दैट मीन्स t1 टाइम रे फ्रेंड x1 बाय t1 करके आम वेलोसिटी मेजर कर पारुछे 2 पॉइंट रे x2 t2 संगे पाउछे 3 पॉइंट रे x3 t3 संगे पाउछे. तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आम कौन पाऊ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो टाइम रे भी. ओके परीक्षा आप पढ़े फ्रेंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर मोमेंटम ये ऑप्शंस रे देथिबो. ओके तो आमर आंसर है जो फ्रेंड वेलोसिटी. ओके तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर फ्रेंड नेक्स्ट आपन को आसिला वेलोसिटी टाइम ग्राफ. This is x-axis friend, this is the y-axis. I mean age time, that is t, and this is velocity. Let us say this is v. This is the velocity time graph.
let's say friend any particular path from here to here. So there the time will be t1, here the time will be t2. This is the point of velocity, this is v1, this is another point of velocity, this is v2. This is this velocity time graph. Already friend हमें जानी चाहिए जो for the definition for acceleration is dv divided by dt. That means rate of change of velocity with particular time. तो यदि 1 रे देखिए friend this will be v1 divided by t1. 2 point रे देखिए friend v2 divided by t2. हाँ ना फ्रेंड कहूँ तो यही ग्राफ रो फ्रेंड आम कौन देखिले वेलोसिटी जब टाइम संगे चेंज होची वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो यही फ्रेंड कहि परबा velocity time graph shows कौन फ्रेंड देखो जी एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम. जोटा को फ्रेंड आम कौन कहू इंस्टांटेनियस एक्सेलरेशन बिकॉज टाइम आम चेंज हो फ्रेंड t1 टाइम रे v1 बाय t1 हो आमर चेंज t2 टाइम रे हो v2 बाय t2 हो चेंज जेहेतु पर्टिकुलर टाइम रे फ्रेंड हो वी कैन कॉल दिस एज इंस्टांटेनियस एक्सेलरेशन. फ्रेंड परीक्षा जब पढ़ला वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कौन शो करे आप आंसर देवे वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन चेंज और इंस्टांटेनियस एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम. वेरी क्लियर. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पर आम जा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ओके सेम फ्रेंड्स दिस विल बी आवर टाइम t, दिस विल बी ए मु लिखि दउछि फ्रेंड शॉर्ट रे आप तो जानी ही पारुथबे दिस इज द एक्सेलरेशन. सो अगेन लेट अस टेक इमोशंस लाइक दिस from here to here. Let us say this is the point 1, let us say this is the point 2. This will be our time t1, this will be our time t2. Let us say this is a1 and let us say this point is a2. So this will be a acceleration time graph. Okay, तो फ्रेंड आमर तो फ्रेंड एक्सेलरेशन फॉर्मूला नहीं पर गोटे जिनस आम जानी फ्रेंड एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv divided by dt. हाँ ना नहीं करूँ दिस इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू मुझे लिखिपारे फ्रेंड a इंटू dt. हाँ ना नहीं. ओके फ्रेंड dv रो अर्थ कौन दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ v. v मीन्स ये जगह होची वेलोसिटी. तो फ्रेंड मुझे लिखिपारे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू dt. तो v2 माने कौन फ्रेंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. v1 माने कौन फ्रेंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू dt माने टाइम चेंज फ्रेंड जब v2 v1 लिखिले आई कैन लिख t2 माइनस t1 फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम माइनस इनिशियल इंटरवल ऑफ टाइम. हाँ ना नहीं मत कहूँ तो फ्रेंड ये गोटे जिनस देखिले जदि आम एक्सेलरेशन इंटू टाइम चेंजेस t1 बाय t दुईटार प्रोडक्ट आम करूँ आम कौन फ्रेंड पाऊँ चेंज इन वेलोसिटी. हाँ ना नहीं फ्रेंड मत कहूँ आम जस्ट एवं देखिले ए हूँ एक्सेलरेशन टाइम चेंज हो टी इज इक्वल टू dv. ओके तो दिस इज एक्सेलरेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम वी आर गेटिंग चेंज इन वेलोसिटी. तो यू फ्रेंड आम जानले जदि आपको पचरा जे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपन कौन इंडिकेट करे इट शोज चेंज इन वेलोसिटी. वेरी क्लियर फ्रेंड्स. तो परीक्षा फ्रेंड डेफिनेटली 3टा ग्राफ गोटे क्वेश्चन आप सियोर पाइबे. फास्ट में पढ़ले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंस्टांटेनियस वेलोसिटी शो करे. फ्रेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंस्टांटेनियस एक्सेलरेशन शो करे. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एथि फ्रेंड इंस्टांटेनियस वर्ड आसीबनी. ओके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. Okay, so friends, this is all about the concept regarding rectilinear motion. तो आगे को आहुरी भी डायनामिक्स विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट वीडियो आपन भाई आसीबो. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.